from IICCB. I request the President, all the trustees, would you please join us for the photograph. Yeah, please, everyone. Yeah. So I take 2 minutes, 1 minute in fact, to thank Madam. In fact, I was a big fan of Hafiz Contractor. Okay, I don't know how many of you know Hafiz Contractor. How many of you know him? Okay. I was thinking he is the man behind who can create dream homes. Today, man, you have changed. The way you were talking, it was like your heart was connected to our hearts directly. So clear it was. Inspirational. Thank you. Growth and success is a very relative term. It can mean different things to different people. For me, success is not numerical. It's about creating a mark that is qualitative and experiential. So would I feel successful if I had 500 employees and created generic designs and I was anonymous because I did what everybody did and I didn't have a unique story? No, to me that would not mean success. To me, chartering my own path and creating an identity that I truly believe in, that's part of my being, and to celebrate a uniqueness within that, that to me is success. And I think you can create that with a team that's formidable, that doesn't have to, be enormous, but have an enormous intent and an energy that captivates a very large audience because of that very precise and particular way of functioning, thinking, and being. When I studied in London and New York and I returned to Bangalore, I was the first themselves off and say, let's try again. And then let's try one more time. And let's keep trying. Let's just keep moving forward. And those are the people who eventually are the ones left standing. And that practice is called many things. It's called being consistent. It's called being steadfast. But it's also called having a passion for it, because you can't walk through all those channels of fire if you don't really love what you do. That's called identifying what inside of you keeps you most alive, really early on. And then you don't even need the courage, because it is a fire that will lead you. It's a force, it's a creative energy. When I wake up every day, I don't have to say, oh, it's yet another day and yet another week. I've been doing this for over 20 years. And I learned a little line from my 11-year-old son, who said, when you think you're done, you're only just begun. And for me, I feel like I just started every day. I wake up and I have a new client and a new project and a new ambition and a new dream. When the gentleman before was talking about sustainable community development, I think, maybe it's that time in my life now. I've worked with a lot of people with immense means and created dream homes and immensity of grandeur and style. Why not now work with people and create reverberates and, memorable and important experiences with a tight budget? Have my hands tied for a change and then find the creativity within that spectrum. So that kinetic energy from within to constantly move and shift and learn and grow is something that is a life force. And it keeps you constantly growing. There's this one iconic expression in life. It's called 3 feet to gold. And there's this young man and his father who set out to be gold prospectors in Colorado. At the time, everyone was looking for gold, and it was the gold rush in the early 1800s. And they dug and dug and dug to find that vein of gold, and they kept going for years. And then they looked at each other and said, I think we're at the wrong spot. We need to move away from here, start elsewhere. They sold their equipment to a garbage clearer who bought it for virtually nothing.
And he said, well, if they've been digging for so long, they can't be far from gold. And he started. He was 3 feet from gold. 3 feet from gold is an expression I use when things get tough and you're weary and you think, maybe, just maybe, this is, all you can do. You're always just 3 feet from gold. Because when you're ready to give up, it is ready to give up. It just depends who does it first. So growth for me is growth personally, because that's when your enterprise will grow too. You cannot be static and expect the people around you to be motivated. You cannot be static and expect that you're going to think new thoughts. Here with us. Thank you very much. And I would love. IICCB की तरफ से आपको ऑनर किया गया है वुमेन्स डे के इस मौके पर, क्या मैसेज है? मुझे मैसेज ये है कि विमेन को ऐसे सपोर्ट करेंगे, उनकी आवाज़ें सुनेंगे, उनकी आवाज़ें को दूर तक पहुंचेंगे तो पूरी कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा है। और हम खुश हैं कि हम लोगों को इंस्पायर कर सकें और हमारा रास्ता भी अभी जारी है, तो हम भी बहुत सीखते हैं। इतने सारे लोग हैं आज जिनसे मिलके बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि आगे चल के इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत पॉसिबल है। और ऐसे ही फोरम्स में लोग, लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, मिलाप होता है और इनमें से बहुत न्यू क्रिएटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और फ्रेंडशिप्स भी शुरू होते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन से आपने करियर शुरू किया और आज आपकी खुद की कंपनी है, तो एक औरत के लिए, एक खातून के लिए क्या तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं? पॉसिबल क्यों नहीं है, और होने भी चाहिए। जैसे आदमी को पॉसिबल है तो फीमेल्स को भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और विमेन अपने अंदर से ही बहुत ही मजबूत हैं, उनकी इमोशनल और उनकी मेंटल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर अपॉर्चुनिटी देंगे उनको पहले पढ़ाएंगे और उनकी फैमिली सपोर्ट हो तो आसमान छू के उसकी से भी ऊपर जा सकते हैं। और ये करना बहुत ज़रूरी है आज के गांव में और आज के दुनिया में। एक वुमेन एक पूरे घर और उनकी पूरी कम्युनिटी को ऊंचा कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कहेंगे? IICCB ने आपको जो आज ऑनर किया है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल प्लेटफॉर्म है। आज आके मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे रिलेशनशिप्स शुरू हुए हैं और इतना सारा सीखने को, सुनने को, जो औरतें अंदर हैं जो बात किए हैं, मैं तो बहुत खुशी थी कि इतना सारा पावर है उनके अंदर करने को। तो इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू हैव दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। Another round of applause, ladies and gentlemen. बेंगलुरु में IICCB इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो की एक और शानदार पहल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंगेजमेंट प्रोग्राम N2N का इनाकाद, साथ ही विमेंस डे सेलिब्रेशन की खूबसूरत महफिल। जी हां दोस्तों, 9 मार्च 2024 बरोज हफ्ता बेंगलुरु के JW मैरियट होटल में इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो IICCB का एक अहम तरीन इजलास मुनाकद हुआ। मकसद था बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ के फ़रोग़ के लिए मौजूदा तकाज़ों और ज़रूरतों को समझना, माहिरीन के ख़यालात को जानना और एक दूसरे से मुलाकातें करते हुए बिज़नेस के फ़रोग़ के लिए नई राहें, नए अपॉर्चुनिटीज़ से हम आहंग होना। इस इजलास का एक अहम मकसद आलमी यौम ख़वातीन इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना था। लिहाजा 3 ख़वातीन जिन्होंने अपने अपने फील्ड में आला मकाम हासिल किया है, अपनी पहचान बनाई है, ऐसी ख़वातीन के अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए अवार्ड से नवाजा गया। फॉल्क्रम स्टूडियो की बानी और मशहूर सेलिब्रिटी हुस्ना रहमान, प्रोटोकॉल कंपनी की बानी और MD कौसर खान
और पुलिस डिपार्टमेंट FSL की सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हुस्ना तबस्सुम को IICCB ने अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर IICCB के प्रेसिडेंट KM नूरुल अमीन ने डिस्ट्रीब्यूशन के मौजू पर इंतहाई मालूमाती लेक्चर पेश किया। अवार्ड हासिल करने वाली ख़वातीन ने भी अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे की रोशनी में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कई कीमती बातें कहीं और मुस्लिम ख़वातीन को एक अहम तरीन पैगाम दिया। मास्टर ऑफ सेरेमनी, मेमोरी स्किल के माहिर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट और मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर रफ़ीउल्लाह बेग की निज़ामत ने इस महफिल को 4 चांद लगा दिए। इस इजलास के ज़रिए मुस्लिम कम्युनिटी के ताजिरों सनतकारों को ये पैगाम दिया गया कि वो अपनी तिजारत बिजनेस को आला मकाम पर ले जाएं, मुल्क की तामीर व तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आ भी गए, अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आ भी गए, बंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे, बंदे तकदीर किस्मत का गिला करते रहे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।